Good morning, children of class 3. Today I'll be doing your science lesson 11, light, sound, and force. Okay, light, everyone knows what is light. ठीक है, लाइट का मतलब है रोशनी माने आलो. साउंड मीन्स आवाज. ओके, आवाज डिजिटल. एंड फोर्स इज जोर लगाना. जैसे आई हैव टू पुश someone like this, so you're pushing someone, so that is जोर लगाना. Okay, now in this lesson we are going to learn. First we'll start with light. Okay, you get light from the sun. From where do we get light? The whole earth gets light. पूरो पृथ्वी तक कोथाई थी के आलो टपाए. कहाँ से हम लोगों का धरती को रोशनी मिलता है? सूरज से. यस, इट गेट्स इट फ्रॉम द सन. यू ऑल्सो गेट लाइट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब. नाउ यू गेटिंग लाइट फ्रॉम द electric bulb. See, this is the electric bulb. We are getting light from there. Okay, things that give out light are called source of light. Anything that is giving light. Now in this book, I'm not in the sun. I'm not sitting in the sun. আমি বাইরে নেই, সূর্য আলো কাছে নেই, हम सूरज के रोशनी में अभी नहीं बैठे, हम लाइट में बैठे हैं. क्या है? बल्ब जो है उसके हम बैठे हैं, उसके नीचे बैठे हैं. दिस इज़ दैट, दिस लाइट इज़ गिविंग मी द लाइट. This light is giving me the light. Okay, this is spreading the light on my book. Light is very important. You can see things only when there is light. Okay, plants can make food only with sunlight. Light is very important in our life. अगर light नहीं है, फिर light was not there, we would not do the cooking, we could not study, we could not see each other, we cannot see the beauty of the world. Outside the nature we cannot see the beauty. We can't do any work. Nothing we can do. Neither we can read nor write, go to school or do any work. Nothing we could do if there is no light. Think, there is no sun, there is no bulb, there is no candle, there is no fire, nothing. Then what will happen? The whole world will be dark. Would you like to live in such a dark world? No, you cannot live in a dark place. In the dark world we cannot live. So light is very important. Who's giving the main source of light is the sun. Electric and these things are artificial, like we make it. This is man-made things which is giving you light, but this is God's thing which is spreading throughout the world. You don't need to switch on or switch off for this. ठीक है, इसके लिए switch on switch off नहीं करना पड़ता है, but you get the light. God has given us the sun which is spreading light throughout the world, throughout the earth. In the whole earth it spreads the light. Now this candle we have to burn it. After certain time the candle will get over. कुछ समय के लिए कैंडल ख़त्म हो जाएगा, इसका रोशनी नहीं रहेगा. दिस इज़ मैन मेड, इट इज़ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. ओके, बट दिस इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द सन. ये भगवान का जो चीज़ है, प्राकृतिक जो हम लोगों को मिल रहा है, ये ख़त्म भी नहीं होगा और इसको जलाना भी नहीं पड़ता है. এটা আমাদের আগুন দিতে হয় না, না লাইট অন অফ করতে হয় না. ওকে, ম্যাচ বক্স নিয়ে এটা জ্বালাতে হয় না, যেরকম ক্যান্ডেল জ্বালায়, কিচ্ছু করতে হবে না. ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? বাল্বটা भी আমাদের সুইচ অন অফ করতে হবে, ওয়্যার সঙ্গে जोड़ते হবে. दिस इज़ ऑल्सो मैन मेड. दिस इज़ मैन मेड. आदमी इंसान बनाया इसको, लेकिन ये सूरज को भगवान बनाया. इसमें स्विच ऑन ऑफ कुछ नहीं करना है. दिस इज़ फायर. दिस इज़ द लकड़ी जलाना. लकड़ी जब हम जलाएंगे तभी ये जलेगा, ये अपने आप नहीं जलता है, जैसे कि सूरज अपने आप जल जाता है. Chat. Okay, so now you understood this. Now light is very important. You cannot do things without the light. When there is light, then everything, life is there. Plants can make food only with sunlight. Plants also can make food only with sunlight. Shine a torch on the wall. Now see what we are going to do. Now I'm going to show you this. Shine a torch on the wall. Now this is the wall. A boy is standing here and taking the torch and he's shining the wall. Now what do you see? What do you see? You see that the light is in a small place. The light has fallen and it becomes round. It gets a round shape and the light is falling on that. Slowly when you move, like the boy is running here. Now he has moved little far away.
that light will spread on the wall. Now, as the boy moves away from the light, if he goes here, you'll see the light on the wall will become faded. लाइट दीवार के ऊपर जो लाइट पड़ रहा है, जब वो पास में रहता है तो लाइट गोल करके उस पर पड़ता है और उसी जगह में सिर्फ एक पॉइंट पे रोशनी रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो दूर जाएगा लाइट पूरा स्प्रेड होगा। ठीक है, स्प्रेड होकर जैसे ही वो एकदम दूर चला जाएगा, जैसे जैसे दूर जा रहा है यहाँ का लाइट जो है हल्का हो जाएगा। ठीक है, धीरे 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 जब वो बहुत दूर चला जाएगा लड़का, तो ये लाइट एकदम अंधेरा हो जाएगा इधर। ठीक है, उसी तरीके से हम लोगों का सूरज का रोशनी जब सुबह उगता है तो हल्का सा रोशनी उठता है पहले। ठीक है, फिर धीरे 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 क्या होता है, रोशनी जैसे ही सूरज अपना मतलब इट गोज़ द अर्थ, एक्चुअली द सूरज तो मूवमेंट नहीं हो रहा है, अर्थ जब सूरज के पास आएगा एकदम पॉइंट पे, तब उसको लाइट मिलेगा जब नज़दीक आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ही वो पूरा नज़दीक आ जाएगा तब वो 12 बजा होगा एंड you get the earth, full earth gets the light because the earth is right in front of the sun. Okay, now the sun is right in front of the earth. No, the earth is right in front of the sun, so it gets the whole light. When the earth is here, it is coming close to the sun, to the earth, sun. When the earth is coming close to the earth, then the light will be light there, and then it gets. Now when the earth will move and go away from the sun, then what happens? It becomes dark. That is how day and night is created, isn't it? So this is what I wanted to explain you all. Now I'll show you all the experiment. Okay, move away from the wall, the lightened area gets larger and less bright. It will become less bright. In the same way, the sun shines from far away and spreads its light all over the earth. The same way the sun, when the earth is close by एकदम when it starts from the close, एकदम सुबह 3 बजे 4 बजे देखना हल्का रोशनी रहेगा और अंधेरा, फिर जैसे जैसे मतलब धरती सूरज के पास नज़दीक आना शुरू होगा, मतलब आस पास रहेगा, तो वो रोशनी फैलना शुरू होगा। যেই আমাদের সূর্য কাছে আমরা পৃথিবীটা চলে আসে, তখন আস্তে করে সকালে দেখেছো 4টের সময় কত আলোটা অন্ধকার भी থাকে আর আলোটা থাকে, ওই রকমই এই ছেলেটা যখন দিওয়ালের কাছে থাকলো তখন একটু অন্ধকার লাইটটা থাকে আর এক জায়গা শুধু তুমি লাইটটা পাবে, আস্তে আস্তে যখন দূরে যাচ্ছে লাইটটা স্প্রেড হচ্ছে আর যখন অনেক দূরে চলে যায় অন্ধকার হয়ে যায়। ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? নাও আইল শো ইউ দ্য এক্সপেরিমেন্ট। থ্যাংক ইউ।